Dear student, Assalamu alaikum. I start my lesson in the name of Allah Almighty, who is most merciful and beneficent. Dear student, how are you? I hope you are all fine, and I hope that you have learned the previous lesson, that was translation and within lesson question answer. In today's lecture, I first of all tell you that this is an English lecture, class 8, subject English, chapter number 3, topic on the ocean. In today's lesson, I solved the exercise question answers. In exercise, there are two things: rhyming words and prefixes. Let's start the lesson. Unit number 3 on the ocean, and the poet name is S.T. Coleridge. The first portion of this chapter is answer the following questions. नीचे दिए गए सवालात के जवाब दें. Question number 1. Write the main idea of the poem. नज्म का बुनियादी ख्याल लिखें. Answer. One of the themes of the poem is sin and redemption. Sin and redemption. Love for beauty and nature is another theme of the poem. नज़्म के बुनियादी जो मौजू हैं, जो बुनियादी मौजूआत में एक है गुनाह और दूसरा रिडेम्पशन यानी तलाफ़ी करना, छुटकारा पाना. लव फॉर ब्यूटी एंड नेचर, फितरत और ख़ूबसूरती से मोहब्बत भी इस पोएम का एक मौजू हो सकता है या एक मौजू है. क्वेश्चन नंबर 2. डिफाइन द ब्लडी सन. डिफाइन द ब्लडी सन. ब्लडी सन मीन्स सुर्ख सूरज. सुर्ख सूरज से को बयान करें. इन द पोएम द ब्लडी सन इज, द वर्ड ब्लडी सन इज यूज्ड. The answer is the bloody sun means hot sun. It represents the anger of God. सुर्ख सूरज से मुराद गर्म सूरज है या इंतहाई गर्मी का दिन है. गर्म सूरज है, ये अल्लाह के गुस्से को बयान करता है. इट रिप्रेजेंट्स द एंगर ऑफ गॉड. ये अल्लाह के गुस्से को बयान करता है या नुमाइंदगी करता है. यहाँ पे अल्लाह का गुस्सा क्यों इस्तेमाल हुआ? We know that the ancient mariner has killed a bird in pride, and they all were punished for that crime. Question number 3. What do you understand by painted ocean? नक्श किए गए समुंदर से आप क्या मुराद लेते हैं या क्या समझते हैं? Painted ocean is also a word used in the poem. इस पोएम में हम जानते हैं कि जो एंशिएंट मैरिनर है वो दूसरे आदमियों के साथ सफ़र कर रहा है, लेकिन पोइट ने वहाँ पे वर्ड यूज़ किया पेंटेड ओशन यानी नक्श किया गया सूरज, नक्श किया गया समुंदर. पेंटेड ओशन मीन्स आ स्टिल, मोशनलेस एंड लाइफलेस ओशन. यानी समुंदर पेंट किया गया, नक्श किया गया समुंदर से मुराद यहाँ पे स्टिल, जामद, मोशनलेस, बेहरकत, और लाइफलेस ओशन, बग़ैर ज़िंदगी के तासुरात वाला समुंदर है. वाई देयर इज़ नो लाइफ? बिकॉज देयर वॉज नो ब्लोइंग विंड एंड देयर वर नो रिपल्स एंड द शिप वॉज स्टक. नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4. वाई एवरीथिंग वॉज स्टक? हर चीज़ जमी हुई क्यों थी? एंड द आंसर इज देयर वॉज ब्लोइंग नो विंड. हवा नहीं चल रही थी. दस एवरीथिंग वॉज मोशनलेस एंड स्टक. इसी तरह हर चीज़ बेहरकत और जमी हुई थी यानी मुंजमद थी. देयर आर 4 questions
in portion 1. Now we move on the second portion, portion B. Portion B is underline the words in the poem with which rhyme with these. यहाँ पे कुछ अल्फाज दिए गए हैं, उनके हमने राइम तलाश करने हैं. First of all, a question arises in our mind that what is a rhyme, and I define the rhyme. A rhyme is a repetition of similar sounds. It is used for effect in the final positions of lines of poems and songs. राइम से मुराद मिलती जुलती आवाज़ें हैं, यानी मिलती जुलती आवाज़ों को बार बार दोहराना. ये गानों और नज़मों में इस्तेमाल होती हैं उन अशार को बाअसर या फिर पुर असर बनाने के लिए राइम यूज़ होता है. इन दिस पोएम देयर आर 3 वर्ड्स. इन दिस पोर्शन देयर आर 3 वर्ड्स: ड्रिंक, ओशन एंड मून. Now we will add the rhyming words: shrink, brink, sink, think, zinc, link, ink, pink. This is a list of rhyming words with of drink. The next word is ocean. Ocean, motion, lotion, notion, potion. There are 4 rhyming words of ocean, mean similar sounds. Next word is moon. Then let's start the rhyming words: noon, soon, boon, foon, June, and zone. This is a list of rhyming words. Let's move on to the next portion, and the next portion is C portion. Add prefixes to the following words to change their meanings. यहाँ पे प्रीफिक्सेस ऐड करें ताकि लफ्ज़ों के मीनिंग भी चेंज हो जाएं. तो बच्चे, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी कि व्हाट इज़ सफिक्स and what is prefix. In chapter number 1 we have learned the suffix, and in this chapter we will learn affix. What are these prefixes and suffixes come from? It comes from the word affix. ये कहाँ से आए हैं? affix से. और affix क्या होता है? affix का मतलब होता है किसी भी लफ्ज़ को हमने नथी कर देना, लगा देना, जोड़ देना किसी दूसरे लफ्ज़ के साथ इस तरह के तरीके से कि उसमें कुछ मीनिंग्स का इजाफा हो जाए. एंड द अफिक्स कैन चेंज द मीनिंग्स ऑफ द रूट वर्ड, मीन बेसिक वर्ड, एंड इट कैन add the meaning to the basic word. There are 2 types of affixes. First one is prefix and second one is suffix. Here are affixes, prefixes and suffixes. From the very word mean prefix. Prefix mean previous fix. Prefix, previous fix, mean the word that is fixed before the word, and suffix, the word that is fixed after the word. Here is definition of suffixes and prefixes. Prefixes. The prefix is a kind of affix that is placed before the stem of a word. प्रीफिक्स से मुराद एक ऐसा किस्म का लफ्ज़ होता है, नथी किया गया लफ्ज़ होता है, जो किसी भी स्टेम वर्ड मीन बेसिक वर्ड और रूट वर्ड या बेसिक वर्ड के शुरू में लगाया जाता है, तो वो प्रीफिक्स होता है. किसी भी लफ्ज़ के शुरू में लगाने वाला लफ्ज़ प्रीफिक्स होता है. फॉर एग्जाम्पल, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट, इंटरेस्ट, डिसइंटरेस्ट. दिस मीन नॉट
Interest mean दिलचस्पी. When we add this with the interest, it becomes disinterest. अदम दिलचस्पी या दिलचस्पी का ना होना. Next is suffix. The suffix is a kind of affix that follows a word's name. It adds a certain meaning to the word. सफिक्स से मुराद एक ऐसा नथी किया गया लफ्ज़ होता है जो कि किसी भी बुनियादी लफ्ज़ के एंड पे आता है और उसके मीनिंग्स में उस लफ्ज़ के मानी में इजाफा कर देता है. फॉर एग्जांपल ट्रबल सम. ट्रबल मीन तकलीफ़. सम है सफिक्स यानी ये बाद में लगेगा. ट्रबल सम तकलीफ़ दे या तकलीफ़ देने वाला. हेयर इज़ एन एक्टिविटी related to suffix prefix. First activity is dis, to add the dis with the words, and second activity is to enter the inter with the word stem. Inter means between and dis means not. Dis means not, inter means between. When we add this, we should know that it will change the meaning. It will change the meaning into negative form. Please, student, keep it in your mind that when we add this, it will change the meanings. It will change the meanings into negative form. This word stem is interest. Disinterest mean अदम दिलचस्पी. Dis and like, it becomes dislike. Dislike means नापसंदीदा या नापसंद. Dis mean not. Loyal mean वफादार. Disloyal बावफा ना होना यानी बेवफाई करना. Dis mean not joint. Disjoint mean अलहदा करना या टुकड़े टुकड़े कर देना. डिस एड विद फिगर. डिसफिगर मीन्स बदनुमा होना, खराब हो जाना या फिर अपनी असली हालत खो देना. द नेक्स्ट प्रीफिक्स इज इंटर एंड वी नो दैट इंटर मीन्स बिटवीन आर अमंग. इंटर सिटी मीन इन दी सिटी या शहर के अंदर. इंटर कनेक्ट बिकम्स आ न्यू वर्ड. इट मीन्स दैट, इसका मतलब यह है कि आपस में जुड़े हुए होना. एंड द प्रीफिक्स इज इंटर. द वर्ड स्टेम इज प्ले. इट बिकम्स इंटर प्ले. इंटर प्ले मीन हसीन इम्तजाज या किसी चीज़ का बहुत अच्छे तरीके से परफॉर्म होना. इंटर एंड द वर्ड स्टेम इज एक्ट. इंटरएक्ट मीन्स तवज्जो देना या गौर करना. इंटर एंड द वर्ड स्टेम इज लिंक. इंटरलिंक, इट बिकम्स इंटरलिंक. इंटरलिंक मीन्स तसलसल होना या फिर आपस में जुड़े हुए होना. Dear student, this is the first activity of adding prefix, and come to the second activity of prefixes. The second activity is use the new words in your sentences. When we add the prefix with the stem word या with the basic word, they became new words, and now we will use all these new words in our own sentences. Use the new words in your sentences. The first word is disinterest. Disinterest. Some students show disinterest in their studies. कुछ तालिबे इल्म
अपनी स्टडी यानी पढ़ाई में गैर दिलचस्पी या अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करते हैं या अदम दिलचस्पी दिखाते हैं, दिलचस्पी नहीं लेते हैं। डिसलाइक नापसंद करना। आई लाइक स्मोकिंग, मैं सिगरेट नोशी को नापसंद करता हूँ। डिसजॉइंट, डिसजॉइंट मीन अलग-अलग करना या टुकड़े टुकड़े कर देना। द गर्ल हैज़ डिसजॉइंटेड हर डॉल, इस लड़की ने अपनी गुड़िया के टुकड़े टुकड़े कर दिए हैं या उसको तोड़ दिया है, उसके सारे हिस्से अलग-अलग कर दिए हैं। डिसफिगर, डिसफिगर बिगाड़ देना। हर फेस वॉज डिसफिगर्ड इन एन एक्सीडेंट, उसका चेहरा एक हादसे में खराब हो गया या बदनमा हो गया था। डिसलॉयल, बेवफाई। नेवर बी डिसलॉयल टू योर फ्रेंड्स, अपने दोस्तों के साथ कभी भी बेवफाई ना करें। इंटरसिटी, इंटरसिटी मीन विद इन दी सिटी आर बिटवीन दी सिटी, शहर के अंदर। द गवर्नमेंट हैज स्टार्टेड एन इंटरसिटी रेल सर्विस, गवर्नमेंट ने शहर के अंदर एक रेल सिटी या रेल की सहूलत फ्राहम की है या शुरू कर चुके हैं। इंटरकनेक्ट, इंटरकनेक्ट है आपस में जुड़े हुए। ऑल दी सोशल इश्यूज आर इंटरकनेक्टेड, तमाम समाजी मसाइल आपस में जुड़े हुए हैं यानी एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ है। इंटरप्ले, इंटरप्ले बहुत खूबसूरत तरीके से जोड़ना या परफॉर्म करना। द स्टोरी शोज अ फाइन इंटरप्ले ऑफ प्लॉट एंड करैक्टर, ये कहानी हमें किरदारों और प्लॉट मीन वाक़यात, वाक़यात के तसलसल और किरदारों का एक खूबसूरत इम्तजाज पेश करती है या हसीन इम्तजाज पेश करती है। इंटरएक्ट, इंटरैक्ट मीन तवज्जो देना या बहुत ज़्यादा फोकस करना। द टीचर मस्ट इंटरैक्ट विद ईच चाइल्ड, एक उस्ताद को चाहिए कि वह हर बच्चे पर तवज्जो दे और उसे देखे। इंटरलिंक, तसलसल होना या जुड़े हुए होना। द सेंटेंसेस इन द एसे आर नॉट इंटरलिंक्ड, ये एसे में जो इस मजमून में जो जितने भी सेंटेंसेस हैं या जुमले हैं वो आपस में जुड़े हुए नहीं हैं यानी इनमें तसलसल नहीं है। डियर स्टूडेंट, हैव यू लर्न द वर्ड्स sentences? Next, come to our diary. The diary appears on your screen. The diary is learn and write question answers and words sentences on your notebook and note the exercise on your book. Okay, Allah Hafiz students.